How long can a democracy keep a man behind bars without a trial? In September 2020, a young scholar walked into a police office in Delhi. He did not run. He did not hide. He believed in the law. That man was Umar Khalid. 5 years later, his name still echoes through courtrooms, protests, prisons, and parliaments. Is this the story of a conspiracy, or the story of dissent on trial? Stay with us, because the answer is far more unsettling than it seems. This is not just the story of one man. It is the story of modern India's biggest legal and moral test. Umar Khalid, a former research scholar at Jawaharlal Nehru University, was arrested under India's most stringent anti-terror law, the Unlawful Activities Prevention Act, or UAPA. The charge: conspiracy behind the 2020 Delhi riots. The consequence: years in jail without conviction. Under Indian law, Umar Khalid remains presumed innocent. Yet his freedom has been suspended by process, not verdict. Why does this case matter? Because it sits at the intersection of law, liberty, protest, and power. Because it forces a nation to ask, where does national security end and civil freedom begin? Before the headlines, before the prison walls, there was a classroom. Umar Khalid grew up in a modest family. Books were his refuge. Questions were his habit. At JNU, one of India's most politically active campuses, Khalid became a familiar face. He spoke, he debated, he challenged authority. जब तक इस देश में भाजपा और आरएसएस है, इस देश को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। हम इस देश की बर्बादी के लिए नहीं, इस देश की आबादी के लिए लड़ रहे हैं। To his supporters, he was a voice of conscience. To his critics, a disruptor. इस देश में हमारा होना हमारी वतन परस्ती का सबूत है। हमारा नेता मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, नहीं है। हमारा नेता महात्मा गांधी है। हमारा नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद है। हमारे नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। नरेंद्र मोदी ने बोला, इनके हाथ में तिरंगा देख के बहुत खुशी हुई। नरेंद्र मोदी साहब 1947 से हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। हमारे दिल में और हमारे हाथ में तिरंगा है। आपको आरएसएस के मुख्यालय पे 50 साल लगे थे तिरंगे लटकाने के लिए। आपसे वतन परस्ती का सर्टिफिकेट हमको नहीं चाहिए। In 2019, when the Citizenship Amendment Act was passed, protests swept across India. Universities became battlegrounds of ideas, streets filled with slogans, hope, and anger. Khalid spoke at public meetings. His words were sharp, political, but legal. हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। हम नफरत का जवाब नफरत से नहीं देंगे। अगर वो नफरत फैलाएंगे तो हम उसका जवाब प्यार से देंगे। अगर वो डंडा चलाएंगे तो हम तिरंगा उठा के लहराएंगे। अगर वो गोली चलाएंगे तो हम संविधान को हम अपने हाथ को बुलंद करेंगे। अगर वो जेल में डालेंगे तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गाते गाते हम हंसते हंसते जेल चले जाएंगे, लेकिन इस देश को आपको बर्बाद करने नहीं देंगे। Then came February 2020. Delhi burned. Communal riots erupted in the northeast of the city. 53 people died. Homes, shops, and trust were reduced to ashes. And soon, the search for blame began. September 13th, 2020. Umar Khalid was summoned by Delhi Police's special cell. He complied. Hours later, he was arrested. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली दंगों में जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहा है, जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया। हम सबने देखा। उन पे एफआईआर की दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खासतौर से सीए कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास,
कई सारे छात्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई महीने से मुझको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे झूठे बयान चलाते रहते हैं टीवी पे। पहले मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि ये दंगे की साजिश है, कि मैंने लोगों को बोला कि सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन करें। जब मैंने वो पूरी 17 मिनट की स्पीच अपलोड कर दी, जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा गांधी के संदेश की बात कर रहा था, तो अब वो मेरे खिलाफ और नए नए झूठे बयान टीवी में चलाते हैं, मीडिया में चलाते हैं। लोगों से झूठी गवाही देने को मजबूर किया जा रहा है, उनको डरा धमका के पुलिस द्वारा, और कोशिश करी जा रही है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है आज उसको जेल के पीछे बंद कर दिया जाए। क्या खता है मेरी? क्या ये खता है मेरी कि मैं बोलता हूं कि देश जितना आपका उतना मेरा भी है? ये हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत देश है, यहां इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है। आज इसको बदलने की कोशिश करी जा रही है, आज हमको बांटने की कोशिश करी जा रही है, और इस बांटने की राजनीति के खिलाफ जो बोलता है उसको डरा धमका के जेल के पीछे बंद करके उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। वो हमको डरा रहे हैं, लेकिन वो साथ में आपको भी डरा रहे हैं। वो हमारी आवाज को बंद कर रहे हैं, हमको कैद कर रहे हैं जेलों के पीछे, लेकिन आपको भी झूठ के अंदर कैद करना चाहते हैं, आपको डरा के चुप करा देना चाहते हैं। बस एक अपील करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, डरिए मत, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए, हर जुल्म के खिलाफ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। The allegation, he was part of a larger conspiracy to engineer the riots. The law invoked UAPA, a law where bail is nearly impossible, a law where the process itself becomes punishment. Police cited speeches, WhatsApp chats, witness statements. Khalid's lawyers responded, speeches are not crimes. Dissent is not terror. Association is not conspiracy. But the jail gates closed anyway. Inside, time slowed. Days turned into months. Months into years. The trial did not begin. Outside, the country moved on. Inside, Khalid waited. Bail became the battlefield. In court after court, the same pattern repeated. Defense argued constitutional rights. Prosecution argued national security. Judges examined thousands of pages and denied bail. The reasoning was technical, not a finding of guilt, but the seriousness of allegations. Under UAPA, courts only see whether accusations appear prima facie true, not whether they are proven. This distinction changed everything. By 2023, Khalid had spent more than 3 years in jail. No conviction, no trial completion. Legal scholars began to ask uncomfortable questions. Is prolonged detention justice, or delay disguised as law? Human rights groups spoke out. So did international voices. The Indian state responded firmly. Courts are independent. The process must take time. But time was exactly what Khalid did not have. The case crossed borders. International jurists raised alarms. U.S. lawmakers wrote letters. Foreign politicians expressed concern. Inside India, the debate grew sharper. उमर खालिद को पहली बार एंटी नेशनल बुलाने वाले मीडिया सबको सब पता है. Everybody knows why they are in jail. They are in jail because they are our future leaders. पढ़े लिखे हैं. This government is afraid of them. And yes, they are Muslims. Umar Khalid has made 6 attempts to get bail and he's been unsuccessful every time. इस केस का ट्रायल अब तक शुरू नहीं हो पाया है. कई बार जमानत के लिए कोशिश कर चुके हैं लेकिन जमानत नहीं मिल पाई है. ये इस सरकार की एक बहुत ही खतरनाक साजिश है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बुनियादी तौर पर लोकतंत्र के खिलाफ, कि आपको इतना डरा देंगे और आपको एक सिंबल बना देंगे कि दूसरा कोई बोलने का हिम्मत नहीं करे. ये बहुत ही मध्यकालीन तरीका होता है. Some said Umar Khalid symbolized misuse of anti-terror laws. Others insisted the state was protecting public order. Families suffered silently. In December 2025, Khalid was granted interim bail to 13 days. Not freedom,
a pause. He attended his sister's wedding under strict conditions. No speeches, no interviews, no social media. Then he returned to prison. The image lingered, a man tasting freedom, only to surrender it again. The system had not judged him guilty, yet it had not let him go. 5 years. That is the number that now defines this case. 5 years in prison, without conviction, without a completed trial. In January 2026, the story reached its most critical moment. India's Supreme Court delivered its decision. Bail was denied to Umar Khalid. Bail was also denied to Sharjeel Imam, another former JNU scholar and activist accused in the same alleged conspiracy. While considering the bail applications in general and under special statutes like UAPA, the record discloses that all the appellants do not stand on equal footing as regards culpability. The allegations against principal accused indicate a central and directive role in conceptualizing, planning, and coordinating the alleged terrorist act, whereas the material against certain co-accused reflects conduct of a subsidiary or a facilitative nature. Placed on record and examined in its entirety establishes that Umar Khalid and Sharjeel Imam stand on a qualitatively different footing from the remaining accused, both in prosecution narrative and in evidentiary basis relied upon. Both men had spent more than 5 years in jail. Both remained unconvicted. The court ruled that at this stage the allegations against them appeared prima facie true under the Unlawful Activities Prevention Act. At the same time, the court granted bail to 5 other accused in the same case, including Gulfisha Fatima, Marin Haider, Shifa-ur Rahman, Mohammed Salim Khan, and Shadab Ahmad, citing differences in the nature of allegations and evidence. A line was drawn. Umar Khalid and Sharjeel Imam were placed on what the court described as a different footing, accused of having a more central role in the alleged conspiracy. Inside prison walls, the news arrived without ceremony. No press conferences, no slogans, only the quiet confirmation that the wait would continue. And the question echoed louder than ever. When does caution become punishment? The court left a narrow window open. Umar Khalid and Sharjeel Imam may apply for bail again after time passes or after the trial moves forward. Until then, the clock keeps running. The Umar Khalid and Sharjeel Imam cases are still unfinished chapters. Courts will determine guilt or innocence, but history will remember the waiting. This story is no longer only about riots or protests. It is about process, delay, and the cost of uncertainty. The Umar Khalid and Sharjeel Imam both remain behind bars, not by verdict, but by procedure. This documentary does not claim answers. It asks questions, because the true strength of a democracy is not shown in how it prosecutes. It is shown in how it protects liberty while prosecution unfolds. Justice delayed does not stay confined to prison cells. It travels into universities, courtrooms, and public conscience. And in the end, the most important trial may not belong to Umar Khalid or Sharjeel Imam alone. It belongs to a nation deciding how long it is willing to wait before freedom itself stands on trial.